in this video we are just going about how much we are just going to the remaining of the credit and the uses of the credit and monitor of that all the things. Okay, so yeah, first you just have the home pages of that. Then you just click on the you can just search the cost management and billing. Okay, then cost management and billing, that is showing the billing of that part. See, this is the Azure Student Pack, and this is the subscription ID of that. Okay, so this is the showing the status and all thing is unavailable. And you can just go to the cost management as well as for checking all the due and all. Okay, first we will check for that. Okay, so you can just click on this. इस पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा इसका रिसोर्सेज का ओवरव्यू एंड मॉनिटरिंग दिख जाएगी कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ का ज़्यादा यूज़ हो रही है कि छः साइट से जो मेरी एक होस्ट हो रखी है और वर्क स्पेसेस लाइक थ्री वर्क स्पेसेस है एंड 16 यूजर असाइन आइडेंटिफाइज कंपोनेंट्स 7 है मेरे पास. व्यू रिसोर्स में जाऊंगा तो पूरी मॉनिटरिंग आ जाएगी मेरे पास. दिस इज द मॉनिटरिंग डाटा आई जस्ट गोइंग थ्रू दैट पार्ट. ओके, सो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर रखी है अलग अलग तरीके से. ओके, सो okay, see, this is the billing date that I just going that. Okay, so and if you want to check if your how much credit your uses, you just click on this and check your balance. Going to the past this. See, this is showing like the my usage is 36 USD and the 64 USD is remaining. Okay, so I got 100 USD and 267 days is pending of that. You can just use this part. Okay, so मेरे uses कहाँ कहाँ हुए वो भी ये बताएगा आपको जैसे कि this is like the $129 जो मैंने spend करे. ओके, सो ये कुछ यूजेस मेरे पुराने भी आ रहे हैं क्योंकि जो मेरे जो पुराना बैलेंस था उसके अकॉर्डिंग भी आ रहे हैं. तो दिस ऑल थिंग्स दैट यूजेस दैट पार्ट. ओके, सो मेरे जो यूजेस है मेन वो यहाँ यहाँ स्पेंड हुए हो सकता किसी ने. ओके, 164 दैट ऑल द पार्ट ऑफ दैट. डेट टू डेट भी चेक कर सकता हूँ वैसे तो. 30 to 30 नवंबर नहीं, 23 November, 23. This is for 23 part. I check from the July. July. Check from the July. See how the $37 is spending on that. See, this is taking the B1 for the Azure Web Services, $33 of that. It's taking too much, right? See, the B2 has the this part and B1 this part and B1 this part. I think this is my like a portfolio that taking two lot things for that. And F1 app this and this is not taking anything too much. Okay, so this part is like showing all the things of that. Pay as you go data injections is there. So this are collectively that showing all the things of their part. Okay, so this is the monitoring that we need to configure or we need to assure that कि हमारा डाटा इस लेवल पे ही जा रहा है और जितना उस बेसिस पे ही हमारे कितने डॉलर उड़ रहे हैं और जितना अमाउंट उड़ रहा है वो हमको देखना जरूरी है. Okay, so you need to be uh, secure data part. Okay, so this all thing is there and you if you want to like more bit about it, they're showing the separate results. Okay, they're showing the more separate results of that. Like if you go to the back end, then it's showing this part. Okay, this is like the resources part and this is the resources group that which is taking for that uses plus quota that how the they flow and uses all the part is there. Okay, so yeah, see, this is like storing all the things of that. Okay, so ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली हमको
you need to be secure for regarding like कि आपके कितने credits on the basis of that जा रहे हैं. Okay, so you should be ensured that part. Okay, so that's why the issues like कि आपको पता नहीं लगेगा कि और आपके क्रेडिट्स उठ चुके. तो यू नीड टू बी अश्योर्ड दैट. मैं वर्चुअल मशीन से पहले आपको ये समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर हम वर्चुअल मशीन यूज करते हैं तो उसके पहले कुछ प्रीरिक्विजिट और कुछ वार्निंग्स होती है जो यू नीड टू अश्योर दैट पार्ट. ओके, और डोंट वरी बिकॉज आप स्टूडेंट बैक हो तो आपके उससे नहीं उड़ेगा कुछ भी. ओके.